હેલો મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, પ્રયોગ નંબર 4 જેની અંદર તમારા ધોરણ 10 ની અંદર નવી પ્રયોગ પોથી આવેલી છે। સંપૂર્ણ પ્રયોગ પોથી સોલ્યુશન કરવાના છીએ, તેથી ચેનલ અંદર નવા છો તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો। મિત્રો, પ્રયોગનો હેતુ તો કે જુદા જુદા પ્રકારની વિઘટન જે પ્રક્રિયાઓ તેમજ વિસ્થાપન અને દ્વિવિસ્થાપન જે પ્રક્રિયાઓ છે એ સમજવાની છે। તેના પ્રમાણે જે આપણે આ 4 થી 5 પ્રયોગ આ વિડીયો અંદર કરવાના છીએ। તમામ સારી રીતે જોઈશું તો વિડીયો છેલ્લે સુધી બને રહેશો। पहला प्रयोग अंदर मित्रों तमाम जे साधनों की बात करिए तो कि बर्नर, कसनळियों, बेटरी, स्विच, रबर, बूच, प्लास्टिक कप, चाइना डिश, स्टेन्ड ने दोरी। पहलो है लेड नाइट्रेट ने उष्मीय विघटन प्रक्रिया। आ जे प्रयोग है, आ जे तमे जे आकृति है ये साइड में तमारे पेन्सिल की मदद मित्रों दौरवानी रहेशे। बात करिए प्रयोग पद्धति तो एक उत्कलन नली में आश्रे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लो। आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे उत्कलन नली ने चीपिया वडे पकड़ी बर्नर पर गरम करो तथा निकळता वायुनु अवलोकन करो। रासायनिक प्रक्रिया समीकरण तो लेड नाइट्रेट और उष्मा साथे लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अवलोकन से आम लेड नाइट्रेट ने गरम करता कसनळी में कत्थई रंगनो NO2 वायु बहार निकळे छे। निर्णय तो कि आम लेड नाइट्रेट विघटन थई लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन वायु बने छे। त्यानी अंदर बीजा नंबरनो छे कि पाणीनी विद्युतीय विघटन प्रक्रिया। तो जे आकृति है ये सेम टू सेम बाजुनी अंदर दोरी लेशो। प्रयोग पद्धति की बात करिए तो कि मित्रों एक प्लास्टिक कप लई तेना तळिये 2 छिद्रों पाड़ी तेमां रबरना बूच लगावो। आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे आ रबरना बूच ने कार्बन एटले के ग्रेफाइटना विद्युत ध्रुवो दाखल करो। आ विद्युत ध्रुवो उपर ऊंधी कसनळी गोठवो। विद्युत ध्रुवो डूबेला रहे तेटલું पाणी कपमां उमेरो। पाणीमां मन सल्फ्यूरिक एसिड ने थोड़ा टींपा नाखो। विद्युत ध्रुवो ने 6 वोल्टनी बेटरी साथे जोड़ो। विद्युत प्रवाह शुरू करी अवलोकन नोंधो। रासायनिक प्रक्रिया समीकरण तो 2H2 અને વિદ્યુત વિભાજન સાથે 2H2G પ્લસ O2G। અવલોકન પાણીના વિદ્યુત વિભાજન દરમિયાન એનોડ વિદ્યુત ધ્રુવ ઉપર ઓક્સિજન વાયુ તથા કેથોડ વિદ્યુત ધ્રુવ પર હાઇડ્રોજન વાયુ પરપોટા ઉત્પન્ન થાય છે। निर्णय तो कि आम पानी विद्युत विभाजन थई हाइड्रोजन एटले के H2 और ऑक्सीजन एटले के O2 छूटा पड़े छे। आ प्रक्रिया विद्युत विभाजन की प्रक्रिया है। तीजा नंबरे जोईए सिल्वर क्लोराइड की प्रकाश रासायनिक विघटन प्रक्रिया। तो आ प्रमाणे मित्रों जे छे ए प्रयोग दोरी लेशो अने आपणे जोईए प्रयोग पद्धति तो कि एक बाष्प वाटकी एटले के चाइना डिश में आश्रे 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो। त्यारबाद आ बाष्प वाटकी ने थोड़ा समय माटे सूर्यप्रकाश में मूको। थोड़ा समय पछी सिल्वर क्लोराइडनु अवलोकन करो। रासायनिक प्रक्रिया समीकरण तो सिल्वर क्लोराइड सूर्यप्रकाश की हाजरी ने अंदर सिल्वर प्लस क्लोरीन। अवलोकन तो कि आम सिल्वर क्लोराइड ने सूर्यप्रकाश में मूकी राखता तेनो सफेद रंग दूर थई भूखरो रंग बने छे। अने निर्णय तो कि आम सिल्वर क्लोराइड ने सूर्यप्रकाश द्वारा विघटन थई सिल्वर अने क्लोरीन वायु मळे छे। प्रयोग नंबर 4 तेनी अंदर ज लोखंडनी खीली अने कॉपर सल्फेटना द्रावण वच्चे थती धातु विस्थापननी प्रक्रिया। तो जे आकृति है तमारे खाली जगह आपेली है त्यां दौरवानी रहेशे। प्रयोग पद्धति जोईए तो कि काच पेपर ने घसीने साफ करेली 3 लोखंडनी खीली लो। 2 कसनळी लई तेमना पर A अने B लखो। प्रत्येक कसनळी में 10 ml कॉपर सल्फेटनु द्रावण लो। लोखंडनी 2 खीलीओने दोरी वडे बांधी आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे कॉपर सल्फेटनु द्रावण भरेली कसनळी में B में 20 मिनिट माटे डूबाडेली रहेवा दो। बंने खीलीना रंगनी सरखामणी अलग राखेल खीली साथे करो। रासायनिक प्रक्रिया समीकरण फेरिक प्लस कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट साथे कॉपर। अवलोकन की बात करिए तो कि लोखंडनी खीली कत्थई रंगनी बने छे और कॉपर सल्फेटना द्रावणों भूरा रंग आछो लीलो बने छे। आम जे आयर्न द्वारा कॉपर सल्फेट थी कॉपरनु विस्थापन थई फेरस सल्फेट बने छे जे विस्थापन प्रक्रिया है।
પાંચમા નંબરે જોઈએ તેની અંદર જ બેરિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ સલ્ફેટના દ્રાવણ વચ્ચે થતી દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા. તો જે છે આકૃતિ તમે સાઈડમાં દોરી લેશો. જોઈએ પ્રયોગ પદ્ધતિ. તો કે એક કસનળીમાં આશરે 3 ml સોડિયમ સલ્ફેટનું દ્રાવણ લો. બીજી કસનળીમાં આશરે 3 ml બેરિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ લો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બંને દ્રાવણને મિશ્ર કરી અવલોકન નોંધો. સમીકરણ જોઈએ તો આ પ્રમાણે તમારે લખી લેશો. વાત કરીએ અવલોકન. તો કે આમ સોડિયમ સલ્ફેટ અને બેરિયમ ક્લોરાઇડને ભેગા કરતા બેરિયમ સલ્ફેટના સફેદ રંગના અવક્ષેપો મળે છે. નિર્ણય. તો આમ બેરિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ સલ્ફેટ વચ્ચેની પ્રક્રિયા દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે, જેથી બેરિયમ સલ્ફેટ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ મળે છે. વિકલ્પોની અંદર પહેલો વિકલ્પ કસનળીમાં લેડ નાઇટ્રેટને ખૂબ ગરમ કરતાં શું થાય? તો કથ્થઈ રંગની બાષ્પ મળે છે, એટલે કે ઓપ્શન બી. ત્યારબાદ છે બીજા નંબરે નીચેના પૈકી કઈ વિઘટન પ્રક્રિયા નથી? તો ઓપ્શન બી. ત્રીજા નંબરે પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન કરતાં કેથોડ પર કયો વાયુ મળે છે? હાઇડ્રોજન. અને પ્રશ્ન 2 રાસાયણિક સૂત્ર લખો. લેડ ઓક્સાઇડ તો PbO. બીજું છે સિલ્વર ક્લોરાઇડ તો AgCl. 3 સોડિયમ સલ્ફેટ Na2SO4. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો CaOH.